Now, atrial fibrillation, as we already have been aware about, let's say this is what is the right atrium, this is the left atrium, right ventricle, left ventricle. Atrial fibrillation is a condition in which atria are just fibrillating. There is no contraction per se. Atrial contraction per se नहीं होता है. So that is what is an atrial fibrillation. Now, physiologically अगर देखें why exactly atrial fibrillation में ये काम करेगा? How exactly? If you understand this, the mechanism can be understood properly, and this common sense is going to help understand the other aspects also. So, atrial fibrillation में atrias are fibrillating. Atrias are just fibrillating, I can say. Physiologically क्या होता है? Atria contract होता है, ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होगा, वो AV नोड तक आएगा और AV नोड में थोड़ा सा डिले होने के बाद वो प्रोपोगेट होगा वेंट्रिकल्स में. दिस इज व्हाट इज द नॉर्मल मैकेनिज्म. अभी प्रॉब्लम क्या है एट्रियल फिब्रिलेशन में? देयर आर मेनी मोर ectopic foci occurring in the atrias. Because of that, there are more impulses going through AV node. Of course, AV nodal delay तो होती है, डिले है, लेकिन जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है उससे ज्यादा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को मिलेगा. इसीलिए यू सी इन एट्रियल फिब्रिलेशन हार्ट रेट इज मोर. Heart rate is more in case of atrial fibrillation. So, हमने डिस्कस किया कि डिगॉक्सिन का मैकेनिज्म क्या है. डिगॉक्सिन helps in reducing the AV conduction. So, digoxin will only provide a rate control in atrial fibrillation. It will not cause reversion of the sinus rhythm. Because ये तो सिर्फ AV conduction के लेवल पे काम करेगा. If there is no reversion to sinus rhythm, the diagnosis is paroxysmal atrial fibrillation and the digoxin should be withheld. Paroxysmal मतलब कभी कभी होता है. So remember, atrial fibrillation में digoxin तभी काम करेगा अगर वो continuous atrial fibrillation है. Paroxysmal है तो नहीं काम करेगा. Okay? Digoxin is not effective in paroxysmal atrial fibrillation. कभी कभी because of electrolyte imbalances or emotional disturbances or because of stretch of the atrial walls, there can be a paroxysmal atrial fibrillation. So digoxin उसमें काम नहीं करेगा. Digoxin does not control the heart rate effectively during exercise. It should only be considered first sign of those who are sedentary or who have a heart failure. Now this is very very important point to understand. Digoxin अच्छा ड्रग है, लेकिन digoxin heart rate को कंट्रोल नहीं कर पाएगा during exercise. So it should only be considered in the first line those who are sedentary. So those who are active, physically active, should not be given digoxin. क्योंकि digoxin सी एक्टिव होने का इफेक्ट क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, हार्ट रेट शुड इंक्रीज. लेकिन अगर digoxin ले रहा है तो हार्ट रेट नॉट कंट्रोल इन द डज नॉट इंक्रीज द हार्ट रेट, डज नॉट इंक्रीज द हार्ट रेट. सो अगर कोई फिजिकली एक्टिव है तो उसको digoxin अवॉइड करो, बिकॉज द हार्ट रेट विल नॉट इंक्रीज एंड ही विल नॉट हैव there is something called as exercise tolerance. क्योंकि एक्सरसाइज करने के साथ हार्ट रेट बढ़ना चाहिए. अगर हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पेशेंट को एक्सरसाइज सहन नहीं होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस गिव्स अस एन आइडिया अबाउट कि क्या एग्जैक्टली एट्रियल फिब्रिलेशन एंड ऑल्सो फिजिकली एक्टिव पेशेंट में क्या करते हैं. डिगॉक्सिन डज नॉट कंट्रोल द हार्ट रेट इफेक्टिवली इन during the exercise. So it should only be considered first sign of those who are sedentary or who have the heart failure. As such, atrial fibrillation में अगर पेशेंट को otherwise कोई प्रॉब्लम नहीं है तो we don't give any treatment. We just give the anticoagulants वगैरह देते हैं, aspirin देते हैं, so that तो clot ना बने. Heparin also can be given. So digoxin, even if it is a very good drug, ऑलरेडी हम लोग कहाँ पे नहीं देना चाहिए वही डिस्कस कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, वी आर नॉट सपोज टू गिव इन केस ऑफ एन हार्ट ब्लॉक्स, वी आर नॉट सपोज टू गिव इन केस ऑफ हाइपोकैलेमियास, वी आर नॉट सपोज टू गिव इफ द पेशेंट ऑलरेडी हैज गॉट द अदर ड्रग्स व्हिच आर रिड्यूसिंग द पोटेशियम लेवल, लाइक थायाजाइड्स वगैरह है, वो पोटेशियम को कम करते हैं, तो नहीं देना चाहिए. फिजिकली एक्टिव पेशेंट में नहीं देना चाहिए. सो ऑल दोज टॉपिक्स. सो व्हेन वी आर सपोज टू